दिस इज़ भाविक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम फरवरी 2022 के अंदर जो भी IELTS के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं तो उसके अंदर कौन से ऐसे रीडिंग के पैसेजेस है जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम उसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी जनवरी के रिगार्डिंग वीडियो को क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपकी एग्ज़ाम 29 जनवरी के है तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपने उस पैसेजेस को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें एंड तक, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे रीडिंग के पैसेजेस जानने को मिलेंगे क्योंकि जो आपको श्योरली आने वाली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन रिसीव द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so you can make the notes of these reading passages so you can find it out on a later basis, and there are basically three sites from where you can get these resources. The first one is the IELTSviewer.com, the second one is the IELTSmaterial.com, and the third one is the collegedunia.com. So these are the three essential websites from where you can receive these passages from the later one. So the first passage which we are having is the Falkirk will. Second is changing our understanding of health. Third, private schools. Fourth one is the development of modern hot air balloon. Fifth one is the Bakelite, the birth of modern plastic. Sixth one is the search for the anti-aging pill. Seventh is crop growing skyscrapers. 8 reading passages, rising sea. Ninth one is beyond blue horizon. 10th one is tidal power. 11th is the impact of wilderness tourism. 12th one is unmasking skin. 13 is contaminating the Arctic. 14 is Adam's wine. 15 is the truth about the environment. 16 is pulling strings to build pyramid. 17 is climate change and Inuit. 18th is the megafires of California. 19th is scratching the surface. 20 is New Zealand seaweed. 21 is networking as concept. And the last one is nature or nurture. Okay friends, so these were your reading passages which are really essential for you. If you just practice these passages, so it will be really beneficial for you for your upcoming IELTS exam, whether you are appearing for your 29 January exam or you are just appearing for your Feb exam. So it can be very much fruitful for you if you just practice these reading passages. Apart from these, there are also reading passages which are already available on the IELTS Viewer websites, IELTS Material website and collegedunia.com. So you can also practice them. But because ये मैंने बनाया है अपनी prediction regarding, so I personally want you first to go from this all 22 reading passages especially. Okay. और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है तो राइटिंग में ऐसे कौन से ऐसे के टॉपिक्स है जो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसकी लिस्ट. सो तब तक के लिए आप रीडिंग के इतने पैसेजेस को सॉल्व करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.